Just a second, Mandira. Mandira, in which capacity are you being part of this show today? I've done lots of work with Grazia in the past, so I've just come to enjoy the show, to see who the next face that'll be gracing the cover of Grazia will be, and I'm here because Ekta's a friend of mine. आप खुद भी कई cover shoots के पास हैं. What are the major requirements? Major requirements, I think first up is confidence. First up is confidence. I think that is something that I suppose the judges will be looking for here. And that apart, you need a certain kind of look, a certain kind of height, a certain kind of, I suppose, weight. So. You want to ask something? आप पूछ रहे हैं कुछ? Mandira, who do you think, according to you, is the perfect cover girl? Out of all the personalities that we know around the world, who do you think is the perfect cover girl? I kind of like Angelina Jolie because I think not only is she beautiful, she has a beautiful heart. So all that she stands for is what should put her on the cover of magazines. And I think it's not just about outward looks, outward appearances. I think she would be a candidate to grace any kind of cover because of all the work that she's done, all the social work that she's done, all the children that she's adopted, and the fact that she's drop dead gorgeous. इंडिया पाकिस्तान का मैच है 15 फेब को, आपकी क्या एक्साइटमेंट? आप भी क्रिकेट से बहुत जुड़ी रही हैं. क्या एक्साइटमेंट है, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत चाव और बहुत जोश के साथ मैं ये मैच देखूंगी और वर्ल्ड कप के लिए सबकी तरह मैं सब कमेंट्री कर रहे हैं इस मैच में, तो क्या एक्साइटमेंट रहेगा? बहुत अच्छा मतलब अगर वो उनकी कमेंट्री हम पहले सुन चुके हैं, तो अगर वो करेंगे तो थोड़े एक्सपीरियंस के साथ भी करेंगे एंड वन वुड लुक फॉरवर्ड टू दैट. मंदिरा, एआईबी पे क्या रिएक्शन है? एआईबी पे मंदिरा, पिछले 2-3 दिनों से हम लोग काफ़ी बातें सुन चुके हैं. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंक्वायरी के लिए कमीशन बिठाया है और अब ये बात आ रही है कि फिल्म फेडरेशन भी इस पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाला है. किस चीज़ को लेकर? ये जो एआईबी का जो कंसर्ट. आई डोंट लाइक टू कमेंट ऑन इट. आई जस्ट थिंक दैट शुड बी फ्रीडम. आप किसी न्यूज़ चैनल, आप किसी चैनल पर नहीं डाल रहे हैं ये कंटेंट. इट इज़ इरेवरेंट कंटेंट और ये जो कंटेंट है इट्स फॉर द इंटरनेट ओनली. तो आई थिंक देयर हैज़ टू बी अ फ्रीडम ऑफ expression. Whoever's making something like this is trying to make some sort of statement. तो जो लोग कह रहे हैं कि that's all I like to say. Thank you. 10 बहुत सुंदर फाइनलिस्ट है जो अभी रैंप वॉक करेंगे और उसमें से एक जो विनर होगी वो ग्रात्सिया के मार्च कवर पे फीचर होगी. हम एक्साइटेड है क्योंकि हमने इस पे नियरली 6 मंथ्स तक काम किया है. बम्बे की सारी लड़कियां देखी हैं, हम लोग बैंगलोर गए हैं, दिल्ली गए हैं और हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स में से हम लोग ने ये 10 गर्ल्स सिलेक्ट किए हैं जो आज आप लोग देखेंगे इस इवनिंग में. किस तरह का फेस एक्सपेक्ट कर रही हैं आप अपनी एक्टिंग में इस बार? अभी हिंदी में बोलना fresh, vibrant face who has a lot of attitude, who's going to be able to walk the ramp. We just want to find a new face of fashion. हम contestants के बारे में जानना चाहेंगे, कौन-कौन है और कौन-कौन Contestants तो बिल्कुल unknown girls हैं, आपको कोई नाम से कोई strike नहीं होगा, but आज के बाद उसका नाम आपको definitely अभी strike होगा in future. जूरी के बारे में बताएं, कौन-कौन? जूरी में we have ईशा गुप्ता, नेहा धूपिया, प्रसाद नायक, Daniel Boyer, who's a makeup artist, and Saket Dhankar of IMG. जब मैं पैरामीटर्स जानना चाहता हूँ, एज अ जूरी क्या देखते हैं? Firstly तो वो लोग लड़की को देखेंगे, how she looks, how she walks on the ramp, वो कैसे बात करती है, उसमें अच्छी attitude है, वो सब चीज़ें देखेंगे. कितना अलग होगा ये शो अलग और शो से? ये ग्रात्सिया स्पिरिट के थीम में रहेगा. तो कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं है, एक फन बैंड है, उसके बाद एक कॉमेडी शो है जिसके साथ में गर्ल्स रैंप वॉक करेंगी. सो स्पिरिट ऑफ द शो बहुत अलग है. थैंक यू. They're still kicking.
अब सही है। थैंक यू। हाँ यार सर कौशल सर Oh, Mr. Funny Guy, how are you? Okay, sorry. एक मिनट सब तरफ। Mama, come. I think Yeah, I want my mom. मतलब काफी देर से हम पलके बिछा के इंतजार कर रहे थे आपका। हाँ, पल की झपक के अच्छा हुआ इंतजार कर रहे थे, नहीं तो फिर आपकी आंखों में काफी पानी आ जाता है ना, नहीं तो। कहाँ रह गई आप? Okay, can you ask me a serious question? Now, this guy always makes me laugh. I can't answer his questions. Okay. All right. Okay, then आप you have been on the cover of Reza, आप आ चुकी हैं। क्या देखेंगे आज आप जब जज करेंगे? I think सबसे अहम चीज़ जब आप एक ग्रासिया कवर गर्ल को यहाँ आके चुनने की कोशिश करते हैं एज अ जज, सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है कि आप देखिए कितना कॉन्फिडेंस है उनमें, कितनी फ्रेशनेस है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी एबल टू लुक ब्यूटिफुल फ्रॉम ऑल एंगल्स. आई हैव सीन द फेसेस ऑफ द कंटेस्टेंट्स, फोटोग्राफ्स देखी हैं. सम ऑफ देम आर रियली आउटस्टैंडिंग, क्योंकि कईयों के एंगल्स, एटीट्यूड, व्हाट दे लुक लाइक ऑन कैमरा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. It's the attitude they have as a model, and nowadays I feel like the requirement or एक look होती है cover girl की, and we just look exactly for that one little X factor, and hopefully with such experts over here we will definitely find it. कितना प्रेशर होता है एक आपको जज करना है? I think सबसे ज़रूरी चीज़ होती है that you need to understand जब आप एक jury member होते हैं कि not only on this day but on all other days the person that you're going to select, will that person shine through or not, and we are hoping that the person we select over here is not only the cover girl of Grazia but also turns out to be one of the most known supermodels in the days, in the months, in the years to come. One cover girl from all over who you would like the contestants to get inspired by? Well, I think, I think when you're here and you're talking about Grazia, you're talking about some of the most well-known supermodels of all times. And, for me, whether it's India from Madhu Sapre to Noyanika Chatterjee to internationally, whether you're talking about, any supermodel, whether you're talking about Naomi Campbell, whether you're talking about, yes, Cindy Crawford, whether you're talking about Miranda Kerr, any supermodel, there's just that one little X factor, and all of them, for me, it's the attitude that they have, and all these girls are beautiful. They can, the sky's the limit. नेहा, मुझे ये पूछना है, freedom of expression की boundaries होनी चाहिए क्या? अगर आप बात कर रहे हैं as to what happened recently with the release of the video that got released by All India Bakchod on Twitter, I don't think I'm in a place to comment because I think it's silly, and I really enjoyed watching the video. I mean, if I had time, I would be sitting in the audience and watching the show as well, and I don't think that they were out there disrespecting anybody else in particular. They were all very well known and the scripts were very well rehearsed. They knew what they were doing and they were taking a dig at each other. So I don't think that, I think it's being blown out of proportion. नेहा, जो हम देख रहे हैं अभी, Thank you. एक लास्ट क्वेश्चन, इंडिया पाकिस्तान। I think Valentine's Day is a wonderful day to celebrate with the ones you love, because साल में सिर्फ एक ही दिन होता है to tell the people you love how much you love them. I think it's also a hallmark gimmick. So you can just tell the people you love how much you love them every day. You don't have to. What's my resolution? For what? For Valentine's Day? Hopefully I should have a date. There, even the lights go off when I say that. नेहा, they want wishes for the World Cup, India Pak, and Mr. Bachchan will be doing the commentary for the India Pakistan. I think that's fantastic. I didn't know Mr. Bachchan was going to be doing the commentary. I think the India-Pakistan match is going to be bigger than the World Cup final, unless they meet there again. But for me, I'm looking forward to that more than any other match, and we all know what the result is going to be. We also want you to be in the commentary box someday. Hopefully, yeah.
I love cricket. If I'm given a chance to be in the commentary box, I would be. Thank you so much. Thank you. फेवरेट खिलाड़ी आप बस कर यार Shivan Naresh and Ishwarya and Dior and Jimmy Choo. Hard to remember. Monochrome dress. Sorry, what? Monochrome dress. Yes. Okay. Any particular you have an affinity for like wearing monochrome? No, not really. I mean, it's just how the mood. Oh, sorry. It's just how the mood is at that time. It's just how the event is, and whatever is the best out of the lot. You will be judging it with Neha Dubey after. Tell us something about the evening. Well, it's a Grazia cover girl hunt, and I think it's a really cool thing because I wish it happened, when I was modeling, because it just gives a chance to young girls also to be on the cover without actually having a modeling background or being an actor. Isha, who do you think is the perfect cover girl out there that these girls need to be inspired by? I don't think there's a perfect cover girl. I just think cover girl is something if you have the oomph, if you have the personality, if you have the power, if you have fashion sense, if you have the most natural beauty. There are so many things that you look into a cover girl, not just one thing. So I think if you have any of them, you can be a cover girl. So also Valentine's Day is the fall. What's your plan? Sorry, what? Valentine's Day is the fall. What's your plan? What's your resolution? No resolution for Valentine's Day. No plan. I'll be working. क्या वैलेंटाइन ग्राचिया का सवाल पूछा किसी के साथ वैलेंटाइंस पे जाने का पता नहीं यार. I've always been Akshay Kumar fan, so yeah, maybe. Isha, what do you think about the freedom of expression? वैलेंटाइन का सवाल Freedom of expression should be what? Freedom of expression should be bounded by boundaries, like we see the video which happened recently. Ranveer Singh and Karan Johar. I just think, honestly, my real view is that freedom of expression can't be with boundaries because then it's not freedom of expression. Plus, I really actually think that I just wrote about it today that there are actually other real issues in our country like rape, which is happening every day about, you'll see, forget the complaints, the non-complaints are also so many. If you actually counter that there are a lot of issues in our country, why not focus on that, then the politician focusing on something which has not harmed anyone. Yeah, Isha, lastly, जो कहा जा रहा है कि फिल्म फेडरेशन वगैरह भी they are trying to take a step against it. Those people, Which people? those who have
done this, organized this event. Okay. So what do you think on this? Like Film Federation, who is the governing body of the film council in all Hindi film industry, they are also planning to take an No, action. I've not heard any film industry going against it. Then Film Federation. You mean Film Federation? I don't know, yaar. I think it's just, like I said, we're basically making such a big deal out of nothing. It's just a small thing. Let's just focus on the real issues which we have in our country. There's poverty. There's Swachh Bharat Abhiyan we'll be trying to do. There are a lot of issues in our country. Like I said, rape. The other day I was reading that they've just said, BMC has said that if the dogs are creating nuisance, let's just kill them all. Please focus on the real issues. Thank you. Go ahead, you go for that one. थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा आगे। थोड़ा और आगे। ये कैसे जा रहे हो दादा? कहाँ जा रहे हो आप? देखिए तो जाइए। यहाँ। सिमोन, थोड़ा- Yes. Good evening, Simon. Good evening. We had been waiting. कहाँ थे आप? थोड़ा लेट हो गए। मुझे तो बोला गया है we're in perfect time. अभी competition शुरू होने वाला है. और वो पता है एक्चुअली रोका गया था, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक शुरू नहीं होगा। All right, if you say किस so. कैपेसिटी में आप शामिल हो रहे हैं यहाँ पे फिल्म में चल? I am here as a guest to support my friends at all my friends at Grazia and cheer for whoever's going to win. फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर एक मिनट पूछे ना मैम। Simone, out of all the celebs out there, you seem to have a very distinct sense of fashion. You know, the way you carry yourself, it's evolved over the years. What do you think you've imbibed, in your long-standing career about fashion? What have I imbibed? I think, the thing with fashion is it is ever changing, ever evolving, and the thing with people is that they themselves are ever evolving. So if you enjoy fashion, then, it's a fun ride. सिमोन, आप एक अभिनेत्री भी हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम लोग जो आप लोग एक किरदार करते हैं या जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, क्या वो इंस्पायर करती है? तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप लोगों की, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं या एक इमेज देते हैं लोगों के बीच में? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने इमेज पे निर्भर नहीं करता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा आप काम करते हैं, जैसा आप सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग की तरह पेश आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से पूरी की जाती है, इमेज से नहीं. पर आपको लगता है इफेक्ट पड़ता है, जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं लोगों के ऊपर? आई एम श्योर असर तो पड़ता है. खासकर यंग पीपल पे बहुत असर पड़ता है टू बी इंस्पायर्ड बाय द पीपल दैट दे लुक अप टू. सिमोन, हम जैसे देख रहे हो एक वीडियो आया रणवीर सिंह का, करण जौहर का और अर्जुन कपूर का, आपको लगता है कहाँ तक हाँ बोलिए. कहाँ तक आप उसे सही मानती हैं या क्या सोचती हैं उसके बारे में? आपको लगता है कुछ इफेक्ट तो लोगों पे पड़ता ही होगा उस चीज़ों का? मैंने वो देखा नहीं है अभी तक. व्हेन आई सी इट आई विल बी एबल टू मेक अ डिसीजन. बट अब तक जो मेरा ओपिनियन है वो हाउ इज इट हार्मिंग एनीवन. और तीसरा मैम, अभी हमने सुना फिल्म फेडरेशन जो है, जो एसोसिएशन है, दे आर ऑल्सो प्लानिंग सम एक्शन अगेंस्ट देम. आपको ये सही लगता है? आई हैव एब्सोल्युटली नो कमेंट्स टू मेक ऑन दिस. आई थिंक हमारी सोसाइटी इन मामलों में थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए, इन द सेंस दैट जिन्होंने किया है उनको बुरा नहीं लगा तो दूसरों को क्यों बुरा लग रहा है? पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है. इंडिया If the person who the joke is on doesn't mind, why should it bother anyone else? पाकिस्तान का This is not a political evening. Perhaps we shouldn't be discussing these things. Who do you think is the perfect cover girl out there who you could probably tell these girls to sort of get inspired by? Who's the perfect cover girl? I think there are so many. Each one of the wonderful actresses that are on covers every month are beautiful. Each one of the models is stunning. There's too many to pick from. Thank you.